नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्माण। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों की ओर। वाव थराद जिले के प्रभारी मंत्री श्री ऋषिकेश भाई पटेल और गुजरात विधानसभा अध्यक्ष श्री शंकर भाई चौधरी की मौजूदगी में आज थराद कलेक्ट्रेट में अधिकारियों के साथ 26 जनवरी 2026 को आने वाले राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों और नए बने वावथराद जिले में विकास कार्यों की स्थिति। राज्य सरकार आने वाले राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस को नए बने वावथराद जिले में मनाएगी, जिसमें घर बैठे कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम और मुख्य कार्यक्रम मनाए जाएंगे। इस बैठक में प्रभारी मंत्री श्री ऋषिकेश भाई पटेल ने कहा कि जब राज्य सरकार 26 जनवरी को वावथराद जिले में आने वाले गणतंत्र दिवस को मनाने जा रही है, तो यह जरूरी है कि इसे भव्य और सुव्यवस्थित तरीके से आयोजित किया जाए। चूँकि नए बने वावथराद जिले में पहली बार राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस होने जा रहा है, इसलिए यह जरूरी है कि सभी विभाग तालमेल से काम करें और इस उत्सव को जिले के लोगों के लिए गर्व और यादगार बनाएं। मंत्री ने कहा कि वावथराद जिले के सर्वांगीण विकास के लिए सरकार स्वास्थ्य, शिक्षा, सफाई और नए बुनियादी ढांचे सहित विकास कार्यों पर लगातार ध्यान दे रही है। जिले में बारिश के पानी का पक्का हल, बारिश से खराब हुई सड़कों की समय पर मरम्मत, जरूरी ह्यूमन रिसोर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर की उपलब्धता के साथ साथ हर घर तक साफ पीने का पानी पहुंचाने के लिए असरदार तरीके से लागू करने पर खास जोर दिया गया। मीटिंग में पिछले 1 साल में हुए सड़क कटाव की डिटेल्ड लिस्ट मांगी गई और खराब सड़कों की तुरंत मरम्मत करने के निर्देश दिए गए। नवरचित जिल्लो वावथराद અને વાવથરાદની અંદર 26મી જાન્યુઆરીએ માનનીય મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબ અને એટ હોમનો કાર્યક્રમ પણ રાજ્યપાલશ્રીનો એ આ જિલ્લામાં રાખવામાં આવ્યો છે અને પ્રભારી મંત્રી તરીકે અહીંયા આયોજનના કામ, નાની મોટા વિષયો સાથે અધિકારીઓ સાથે ચર્ચા થાય, વહીવટી અધિકારીઓ સાથે અહીંયા નવગઠિત જ્યારે કોઈ પણ જિલ્લો હોય એટલે નાની મોટી મુશ્કેલીઓ પણ ત્યાંની સમજવી પડે ને સમજ્યા પડે પછી એ સરકારમાંથી એને જિલ્લાને મદદરૂપ થાય એવા તમામ કામો માટેની આજની મિટિંગ હતી અને સાથે 3 વિધાનસભાઓ અને લગભગ 8 થી 9 મંડળો એની સાથે બેસી એ કાર્યકર્તાઓની સાથે મળવાનો આજનો મોકો પણ હતો। એટલે સ્વાભાવિક છે આનંદ થાય, પ્રભારી મંત્રી તરીકે અહીંયા આવવાનું થાય એટલે સ્વાભાવિક કાર્યકર્તાને મળીએ અને નવરચિત જિલ્લો હોવાથી અહીંયા વિશેષ ધ્યાન આપી અને આને કેવી રીતે વધુને વધુ મજબૂત કરી શકાય દરેક ક્ષેત્રની અંદર, આરોગ્ય હોય, શિક્ષણ છે, આમ તો વ્યવસ્થાઓ ગોઠવાયેલી છે, પરંતુ આને નવા જિલ્લામાં રીસ્ટ્રેન્થનિંગના સ્વરૂપે કામ કરવાનું છે। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।